हेलो हांजो, हेलो शाश्वत, हेलो ऑप्टिमस। कैसा मैं? बढ़िया। न्यू गेम, लेट्स गो। कीना फिनिश्ड। हॉरर फाइनली ये हॉरर गेम नहीं है आई थिंक। वाइब हॉरर वाली पर हॉरर गेम नहीं है आई थिंक। थंबनेल कुछ ज्यादा ही डार्क है यार। मास्टर को मैंने इमेज दी थी, पता नहीं दूसरा में चला है। हेलो जेन। हेलो आयुष। यार गेंसिन में आज तो वीक बाद कमबैक किया और बीसी कमबैक इवेंट में 400 प्राइम मिले। वाओ कूल। विद एक्सेंट वेरी डीप एंड लो वॉइस्ड है। मैंने ऑलरेडी हेलो बोल दिया है, तो एक और बार हेलो। हेलो हेलो। आई हेट दिस। फिक्स करना पड़ेगा यार। ना 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 रा 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 रा। कीना फिनिश्ड ऑफ कोर्स भाई। कीना फिनिश्ड। हेलो एलेक्स। हांजो भाई 83 पे जेपी आया अभी 6 पुल्स की है अभी तक। कौन बोलता है डैगर वैरायटी स्ट्रीम नहीं करता? इस महीने 3 स्टोरी गेम हो गया। 3 उससे ज्यादा हो गया भाई, क्या बात कर रहे हो? कीना खेली, डिट्रॉइड खेली, अवे आउट खेली, सेकिरो खेली है। सेकिरो भी इसी मंथ ही थी ना आई थिंक। सेकिरो भी इसी मंथ खेली थी ना हमने। रासो भाई ने रिकमेंड किया है गेम। हेलो अनमोल। हेलो उत्कर्ष। नहीं सेकिरो मेरे साथ खेल आया हूँ, ठीक है भाई। हाँ, रासो भाई और उनकी बकचोदियां खत्म ही नहीं कभी। वेटिंग फॉर काफका। अब ये अच्छा सेकिरो पिछले मंथ के एंड में खेली थी। ओ माय गॉड मेरे कान बूम बूम हो रहे हैं। मेरे कान फक भाई। होली शिट, वॉल्यूम कम करो पहले। स्क्रीन, अरे पहले रुक जाओ, मौसम डिस्प्ले कैप्चर ऑन करना पड़ेगा। पहले वॉल्यूम तो कम करने दो। डिस्प्ले कैप्चर के लिए लगाते हैं दिस गेम व्हाट रिमेन्स ऑफ एडिथ फिंच। डिस्प्ले कैप्चर हुआ। नहीं हुआ? मत। बहुत लाउड है भाई अभी भी। साउंड इफेक्ट्स, डायलॉग, म्यूजिक। कैमरा सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ाते हैं।
अरे रासो ये बताओ इसमें वो तो नहीं यूज करना होता है? प्रिया बस एक बाथटब सेक्शन में कॉपीराइट म्यूजिक है तो उस टाइम ऑफ कर देना म्यूजिक। ओके आई मीन आप लोगों को कॉपीराइट से फर्क नहीं पड़ता ऐसे भी। दिखा रहा गेम, चलो हो गया। मौसम कैंसिल करता हूँ। हेलो मणिकांता। ये हॉरर गेम जैसी वाइब दे रहा है बट ये हॉरर गेम है नहीं, इट्स अ स्टोरी गेम एंड इसकी रेटिंग 10/10 की रेटिंग थी, ठीक है। इसमें एम तो नहीं करना पड़ता गन से। और ये 2-3 घंटे गेम है तो मेरे ख्याल से एक ही स्ट्रीम में खत्म हो जाएगी। सर्वाइवल देखो, पता नहीं गन है नहीं है इसमें, क्या बोलना चाहता समझ नहीं है। गन है ही नहीं इसमें मेरे ख्याल से बोल रहे हो। एडिथ फिंच की थ्रिल, ओके। A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. एक सेकंड, थोड़ा डायलॉग वॉल्यूम बढ़ाते हैं, कुछ ज्यादा कम है। I'm just going to start at the beginning with the house. The house. नो गन्स, ओके। स्टोरी गेम है, स्टोरी गेम है। इसकी स्टोरी टेलिंग मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा। ओह ओके, ऑलराइट, वी आर फॉलोइंग एडिथ। This has to be added. Okay, no running. Okay. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. मेरे ख्याल से काफी स्टोरी वाली गेम है पूरी। फिर देख रहे हो जैसे मेरे ख्याल से नरेशन वाली स्टोरी गेम है। ओके, नाइस लॉकेट। नरेशन वाली गेम है मेरे ख्याल से काफी। Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Nope, don't wanna open, fuck up. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. इसमें है ना, और साउंड सो स्वीट, प्यारी आवाज है। रन नहीं है ना इसमें, स्प्रिंट नहीं कर सकते। left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Okay. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. The Finches. एकदम हॉरर वाला फील है, फील थोड़ा हॉरर वाला है। The vibe is there. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. फील हॉरर वाला, हाँ फील हॉरर वाला, पर है नहीं गेम हॉरर। थोड़ा है इसमें शायद, तैने खेली कि नहीं? The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. अच्छा, so ये मेरे ख्याल से questions about my family that only the house knew the answers to. Oh, interesting. Now I am getting the category of the game. अरे 2 घंटे की गेम है, उसमें भी रन करेगी तो और जल्दी गेम खत्म हो जाएगा। हम तो जानते हैं इसके लिए सुख साथ खेलेंगे। रासो भाई खेले थे तब देखी थी। ओह तब क्या नहीं था कि हाइपरलूम में कोई एसिडिंग भी है या क्या, फिर वो सोगन के ई पर प्रॉक करता है क्या? ये सब सवाल जब गेंसन खेलता हूँ तब कहाँ होते हैं? रोम कॉम है ये, यस रोम कॉम है। व्हाट इज दिस गेम? Exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. So I know what happens next. Okay. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words.
स्टोरी पे थोड़ा फोकस करके चलना होगा, ऐसे इधर उधर नहीं ध्यान कर सकते अपना। Now, as a 17-year-old, स्ट्रे भी खेलेंगे हम I knew 2-3 दिन में। exactly what those words were. I was afraid of the house. ओके, घर तक पहुंच गए, थोड़ा ग्रास टच कर लेते हैं पहले पैरों से। नाइस, फील्स गुड, आगे बढ़ते हैं। यार इसमें स्प्रिंट की नहीं है, स्प्रिंट नहीं होता था यार, ठीक है, पर स्प्रिंट चलो रन, हाँ समझ सकते हैं, 2 घंटे की गेम है, दौड़े के जल्दी कंप्लीट हो जाए। रोम कॉम इस वाइब से क्या पाए पता भाई, साइको रोम कॉम हो। पिछवाड़े से Going to the घुस doggy गए door used to be a अंदर। lot easier when I was 11. अच्छा, सबटाइटल नीचे नहीं लिख के आ रहा, सामने दीवालों पे लिख के आ रहे हैं, कूल लग रहा है वो। गेंसन खेल कर वापस लौटियो है एमसी। For the first time in years, I felt like I was home. Oh. Wow. But instead of a family, there were just memories of one. हाँ, डिप्रेसिंग स्टोरी क्यों लग रही है, मैं चिढ़ रहा हूँ बच्चा। हेलो वरुण, मेरे को अच्छा एनिमे की वाइब्स आ रही है, वो भी अच्छी रोम कॉम है। नवा दफा घटा रोम कॉम। क्या खाया था लास्ट टाइम? केचप वचप ऐसे पड़ा हुआ है। Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. ओके, जोमेटो नहीं था बहन जो तुम्हारे पास? क्या है यार, मैं तो रात भर जोमेटो करता हूँ। जोमेटो क्या करो अब पता, लिटरली मैं टॉप 5%, मतलब मैं लिटरली क्या कहते हैं, उनके टॉप 2-3% में रहता हूँ। मैं इतना ऑर्डर करता जोमेटो से। Or how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. The table was still a wreck from the night we left. एंटर दो गेम का, गेम चालू हुई It है was like बस। a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. मैंने आज मैकडोनल्ड से चिकन रैप्स मंगवाया विद चिकन बर्गर। वाओ, सारे कितना फ्लैश करते खाने का। से बात करो, ये देखो तो इंडिया में लाइट नहीं रहती है। मैंने आज वो तो कहो साला इन्वर्टर लगा लिया तो मेरा भी वही हाल रहता था, कंप्लेन मेरा बंद हो गया तो इसीलिए। My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Why'd you come back? To find answers? Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. ओ भाई भाई भाई, what the fuck? अबे भाई, वो जो ऊपर सबटाइटल के वर्ड बने हुए थे वो ऐसे निकल के नीचे जा रहे थे भाई, मैं डरा दिया मेरे को। अबे भाई क्या कैसा है। Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. सोचा बे इन्वर्टर ले लिए हम हैं। अब तो रासो भाई के यहाँ भी दिक्कत नहीं My होती होगी mom लाइट की। wasn't much of an optimist, but
She never stopped believing that my brother Milton बारबरा was हो गई alive. बहन का नाम होगा बार ओके ओ भाई ये कैसे दरवाजा पूरा बंद करके रखा है सील पैक डैम इसके पीछे कुछ तो राज छुपा होगा ये क्या है ये कौन सा मक्खन यूज किया है भाई सब समझ रहा हूँ मैं After Milton कम सील disappeared, है वो दिख रहा Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. देख रहे हो कैसे सब टाइटल के वर्ड जा रहे हैं इट्स टेलिंग मी टू गो दिस वे ये देख रहे हो ये वाला दरवाजा भी वैसे ही बंद है अब ये तो बंद है सारे दरवाजे बंद है मुझे लगता है धीरे धीरे खोलना पड़ेगा सब Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara is here. और बारबार का रूम भी लॉक है Edie's father Odin built the original house. सील तोड़ जाएगा रुक जाओ भाई टाइम लगेगा थोड़ा तोड़ने में 50-50 लूज हुआ तेनारी मिला well Mom must have locked the third floor पहला stairs the तेनारी night we left. okay it's locked we're supposed to go somewhere else now oh I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. थोड़ा तोड़ने में कज tool too small. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. यहाँ पहले नीचे का एक गेट चेक करके आता हूँ पहले मैं जो सही में हॉरर गेम है ये मैं बता रहा हूँ ये साला स्कैम है नरेटिव कुछ नहीं हॉरर गेम है ये पहले ये दरवाजा मैं चेक नहीं किया एक सेकंड चेक Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. स्कैम नो साला चाबी दिया पर काम नहीं किया ऊपर वाले में जाना पड़ेगा वैसे अगर चिकन रैप टेस्टी था फॉरगॉट टू टेल यू दैट नाइस Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Brother Milcom. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. December 13th, 1947. Dear Diary. पक्का हॉरर गेम नहीं है नहीं भाई. But I wanted to tell Everybody has a somebody plan about what's until gonna shit happen. happens. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving. So I looked around for something to eat. Oh, now I'm playing as her. Oh shit. My Halloween candy was all gone. Full narration game है भाई ये. The food was dry, but I didn't mind it. अरे चूहा किसका है ये चूहे का है शायद अरे क्या खा रही है ये अरे गाजर खा के चूहे का भयंकर I kept eating and eating.
फक, उसने लिटरली पूरा वो टूथपेस्ट मुंह में भर लिया। अभी ये क्या खेल रहा हूँ मैं? Dude, this is not looking good. Trust me. Then I heard chirping outside my window. अच्छा, मुझे क्या फर्क पड़ता? Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Go to sleep. Okay, you heard that? Go to sleep. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Oh my god. And suddenly, I was a cat. Okay, I think we're narrating बच्चे की जो किताब में उसने कहानी लिखी थी, मेरे ख्याल से हम नरेट कर रहे हैं, तो वो कुछ भी कहानी बना के उसने रखी फिक्शन अपनी, so we're following that. ले खेल लिस्ट रे, सही में खेल ले। आई रुक, अरे तेरी चिड़िया। The bird was really scared. स्ट्रे गेम प्ले पोग। स्ट्रे यहीं से कॉपी किया स्ट्रे को। Mom and Dad didn't even look at me. Sad life. Sad life. This is not looking actually. I jumped and I almost got her. Oops. अरे यार, इसके लिए सु बिल्ली एज बिल्ली व्हाट? अरे तेरी हाँ का साला है बिल्ली, इसके लिए सु चल रहा है इधर अभी। What? All right. I could tell she was getting really tired. You fucking chidiya, come out. I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Eating that mama bird? I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. क्या व्हाट इन न्यूटन? क्या है ये? Rabbits. क्या पकड़ लिया बैंकर, अब तो मैं खाऊंगा। I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. वाइटी ऐसे कर रहा है? अरे यार कैंसर है वाइटी, कैंसर, नंबर 1 कैंसर। चैट नहीं डालने दे रहा, एरर आ रहा होगा। A mama rabbit. अब कितने रखाएंगे? Too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating.
and suddenly I was a shark. What the fuck? ये क्या है बे? I rolled off the cliff and into the ocean. What the fuck? Now I was hungrier than ever. कुछ भी हो रहा है? Bro, what this kid has some major issue indeed. अरे पानी में नीचे कैसे जाएंगे? I अच्छा. wanted fat, juicy seals. Oh my god. You have some I tore off her flipper, and it tasted really good. थोड़ा यहाँ पर डाइव मैकेनिक थोड़ा टट्टी है क्योंकि तुमको अरे भाई अरे यार ये सील की मां खींचो I grabbed on tight. okay. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Oh my god, अब तुम क्या बन गई हो? Oh boy, snake, it's tentacle, चल tentacle है भाई ये तो. Yeah, what is there? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Octopus, पता नहीं, this is weird. I was big, but I moved real quiet. Trust me. This is some abnormal case. I wanted to stop, but also I didn't. ये क्या भाई पता नहीं क्या खेल रहा हूं मैं
last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have. काफी heavy So I मतलब swam towards किस it. बुक ने सजेस्ट रासू भाई रासू भाई है I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Hello Phantom, what's up? I got closer and closer. ये तो एडिथ फिंच वाला घर है, ये उसी बच्ची का रूम है। All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much ये longer. टूथपेस्ट के नशे के नतीजे And we both know actually delicious. damn रे बाप ओह भाई भाई I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. this is her family tree. Okay, Molly Finch 1937 to 1947. Okay, there's a family tree. ये पक्का हॉरर नहीं है ना? नहीं भाई। I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. मेंटल हॉस्पिटल का अल्फा अपडेट मिल गया था इसे। ऑल माय स्टमक बाय बाय। हैवी गेम हैवी गेम। This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie Hello, would have, Chidori, but what's up? Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Her room भूख लग रही है अब तो was लगेगी। For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Okay. Odin 1880 1937. ये यहाँ से इधर शुरू हुआ है और फिर ये इधर ये पूरा फैमिली ट्री ग्रो होके गया है। वाह क्या टॉयलेट है भयंकर। The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink यार बाहर का व्यू कंजरी जैसे लगता है। It was a pretty big trace. उसको लेफ्ट साइड कर स्वाइप करता। ओके ओके मैं मिस करता। ओह there's a secret in this bathroom. There's a secret in this bathroom.
It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Damn. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. जरा वो चेक करके आते हैं जो फिल्म वाली कैम थी. कुर्सी क्यों रखी है She'd साला? been in her 90s. Bottom. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. अबे घर है कि मिलिट्री बंकर पता नहीं. नहीं हुआ कुछ. Odin Finch buries the latest victims it? of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Johan. योहान. मास्टर एनिमे में भी जो मेन एंटागनिस्ट है वो भी योहान ही है उसका नाम. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Huh? What? Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. घर ला रहा था साथ में, वही देखा मैंने, घर ला रहा है. यहां पर ये जो दिखा रहा था इस वाले फ्रेम में, घर साथ, यहां से पूरा घर बोट से लेके जा रहा है. ठीक है ये damn भाई. Whatever's wrong with this family, it goes Odin. back a long ways. Odin. I knew Grandpa Sam had a twin. Oh. And then he never talked about him. क्या बात, क्या बात, क्या बात. रुको जाओ, अभी नहीं जा रहा मैं, पहले पीछे मुझे स्टेयर्स ऊपर चेक करने दो. क्या भाई क्या बनाया. आई जस्ट गॉट द न्यूज़ रेडर में इज कमिंग HSR. यस वो तो पहले ही पता था, तुम लोग नहीं पता था, मैं तो पहले बता रखा था. 1.0 में पहले पता चल गया था साकुरा जाइमिक और रेडन आएगी होंका स्टार हिल में. अब प्लेबल भी होंगे दोनों. हंट लाइटनिंग है, उसका किट भी लीक हो चुका है का.
वो 1.0 में किट लीक हो चुका था The thing I remember is that when he made up his mind, अंटिल लाइटनिंग आया that वो was it. ओ भाई तेरी टांग टूट रही है आया मैं झुला रहा हूँ My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. क्या करना है इसको झुलाना है मेरे को बस अच्छे से झुला झुला तो रहा हो अच्छा अच्छा At Barbara's funeral. दोनों यूज करना है पता है दोनों जॉयस्टिक यूज करना है तब जाके झुला he पाएगा wasn't. I think मैं एक ही से झुला रहा था दोनों यूज करना है जॉयस्टिक क्या यार ओ भाई थोड़ा ज्यादा तेज झूल रहा है अरे पार हो जाएगा नदी में चला जाएगा भाई Sam, come in. Dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. ऐसा झूलते हैं बेबी Maybe if I hadn't said that. ओ Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if मम्मी मैं झूलने में बिजी हूँ झूला में मजा आ रहा है मम्मी 360 मार दूं maybe he'd still be here. But I doubt it. ओ भाई 360 I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember Ooh. about my brother. टैक्सी अबे भाई मेरा सर घूम जाएगा The day he made up his mind to fly. ओ नादाम परिंदे आय हाय क्या भाई क्या 360 मार दिया बॉयज कितने की है गेम 800 की है शायद Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. ब्रो व्हाट ना फिजिक्स की भाड़ में नहीं फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही था ना जब तुम एक पॉइंट है और अगर तुम इतना फोर्स लगाते हो उससे अगर तुम जुड़े हुए हो तो तुम उतना फोर्स लगाओगे तुम उस मतलब उससे बाहर निकलने के लिए तुम पूरे रहोगे ग्रेविटी के अराउंड ही रहोगे ना तुम ऐसे में घूमते रहोगे पूरे वक्त अगर तुम इना फोर्स लगा रहे हो निकलने के लिए बाहर तो तुम उसी सर्कल में घूमते रहोगे वेरी गुड नाइस वन Calvin the fucking idiot. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Best storytelling game है ये. The passages were a pretty tight fit. When you are walking and swing the rope, you should fold पर rope पूरी सीधी थी, हैं? अरे तो उतने फोर्स लग रही तो सीधी रखने की जरूरत नहीं है. अगर जब कम फोर्स हो जब पड़ता है तब जाके वो रोप मुड़ जाती है. But if you have enough force, क्या बारबरा फिंच के रूम में आ गए हम. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. यहाँ था बारबरा कहाँ पे? बारबरा इधर है ना ट्री में. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Class 9 physics, indeed. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one.
old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career. गेम किस जॉनर का है? स्टोरी टेलिंग. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest इस एग्जांपल पेंडुलम का ले लो. हाँ. current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw Oh. and had to be rushed to the emergency room. तो ज्यादा खून नहीं निकल गया. Got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Fucking weird kids reading and. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? I'm loving this. जिस तरह से कॉमिक को ये नरेट करके दिखा रहे हैं ना, वो बहुत कूल लग रहा है. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a second. Oh. तो उधर की है उसमें. Ah. Hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. I am gonna use this inside. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. भाई क्या कूल चीज है डूड. मैं कॉमिक के अंदर एकदम कॉमिकल भोसड़ी के कंटूर. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, Hi, I'm not this is scared, so stupid, I'm motherfucker. furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... बंद कर भाग चुप भोसड़ी के. But she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter.
हाँ इधर आता है. She heard whispering. It was coming from inside the house. Oh भाई. Oh dear. Ain't no way. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed. What in the plot twist? Time. He took it all pretty hard. But Okay, bye. that's another story. Those were the real monsters. God damn. Barbara, tucked inside the music box, is all they ever found of her. Her ear. What the fuck? Now that's what I call a real eerie tale. And very nice comic. I loved it. Wow. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Damn. Maybe what Edie saw was a happy ending. That was a happy ending. Well, wow. Oh wait. वो और कुछ तो नहीं बचा ऊपर. I would love to read that comic again. भाई क्या गहन फाड़ती भाई comic. अभी यहाँ से कहीं और तो नहीं जाना है. Done with this Barbara place. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Oh yes, time for the music box. Yes, music box. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Archie shit, bro. I remember asking Mom once about where Walter had gone. यार टॉर्च लेके आने नहीं चाहिए थी, हैं? टॉर्च लेके आने थे, I think मेरे को She said ऊपर after से. Barbara But died, he ठीक got है. as far away as he I could. thought the torch ही नहीं
If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Okay. A Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, Holy shit, मेरा controller इतना खतरनाक वाइब्रेट मार रहा, पूरा हिल गया मैं. but after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. कौन सा कंट्रोलर है? कॉस्मिक बाइट का स्ट्रैटॉस ज़ेनॉन वायरलेस है. एक कंट्रोलर लेने का, उसके साथ एक डॉगल लेने का अलग से. बेहतरीन कंट्रोलर है, बहुत बेहतरीन है रासवाई. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. अबे ऐसे ही अमेज़न से, हाँ अमेज़न पे मिलेगा. Everything just मैं आपको लिंक भेज दूंगा. stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. एक सेकंड, मैं वो चेंज करना भूल गया था. ये जाके कीना के प्लेलिस्ट में पड़ जाएगी नहीं तो. लाइट ऑफ कर खेलते हैं. और हॉरर गेम नहीं है भाई. हॉरर गेम नहीं है, चल. हॉरर गेम नहीं है, बस दिखने में हॉरर गेम जैसा दिख रहा है बस, पर है नहीं. वॉल्टर इस वाले ट्रिप है ना. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. अच्छा, वो दरवाजा वो तोड़ के ऊपर से चला है इधर. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. Okay. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. ऐसा भाई कोई हॉरर गेम सजेशन भी दे दो डैगर को. The sun on my face. Walter died when I was 6.
सजेशन भी दे दो डैगर को जिससे गेम फट जाए। मैंने पेटी में मोस्टली हॉरर गेम्स खेल रखे हैं यार, देखते हैं आसु भाई के पास शायद हो कोई। मोस्टली मैंने खेल ही रखे हैं, जितने भी अच्छे अच्छे हॉरर गेम सारे खेल रखे हैं मैंने। Basically, he got fed up from hiding and died. वो समझ गया मैं। वो लिटरली एक जगह में बंद रह के थक गया था, you know? Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two. अगर खेलना है तो कोई वैसा खेलो जो कोऑप हो। कोऑप बोरिंग लगते हैं मेरे को हॉरर गेम्स, मजा नहीं आती है, हॉरर का फील ही नहीं होता उनमें। But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. I don't know if I should even be writing this. सारे के का हैं, सारे के स्टोरेज ले लिया फैमिली ट्री? नहीं, क्या ये एंड है क्या? बाहर नहीं जाना था क्या? बचा हुआ पीछे जाना है वापस? मैं सही जा रहा हूँ ना, मैं उल्टा तो नहीं कर रहा हूँ? Maybe it'd be better if all this just died with me. Okay. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. अगर डेट्रॉइट के ड्रेड आउट खेला है जापानीज हॉरर गेम? नहीं। You probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Hello, What monster. kind of So family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. oh bhai, 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault.
Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Molly Fillin, Calvin French. I'm sure Odin's monument had Sir been Kane his for idea. game had My mom ड्राइव was फट always जाती है. trying to अच्छा, make ड्रेड it, आउट. but ओके. Brady, the past never गेम went क्या away. बेस्ड है? ये स्टोरी टेलिंग गेम है, नरेटिव टाइप की. देखने में हॉरर जैसी फील देता है बट है नहीं. The water at low tide. अच्छा, इसमें कॉइन डालना पड़ेगा ना. Edie said Acha. she dreamed about the old house every night. ओह, डन है. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. आज मैंने वुल्फ अमंग अस स्टार्ट की, मजा आ रहा है. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. पेड़ पे जाना जरूरी है. ये गेम आउटर वाइल्ड्स वाली फीलिंग दे रहा है. मैंने खेली नहीं है. ऊपर ही चढ़ना है मेरे को लग रहा है. आई थिंक नो. अगर आज मैंने होल फॉर्म का स्टार्ट की, मजा आ रहा है. अभी थोड़ी खेली है क्योंकि मुझे हैकर कराने भी जाना था आज रात. मैं खेलूंगा बाकी का. ओके, खेलूंगा. जब खेलना डिस्कॉर्ड पे खेलियो, मैं भी देखेगा बैठ के. डिस्कॉर्ड खेलना, मैं भी खेलेगा, मैं देखेगा बैठ के. I never met Grandpa Sam. रेवेनेंट 2 खेलने का कोई प्लान है? रेवेनेंट 2 देखा मैंने, मन नहीं है. अच्छे लगे देखने में, मन नहीं है कुछ. They were both pretty intense. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Mm-hmm. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. What? कैमरामैन डगुर के साथ. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I
I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. भाई चुड़ैल लग रही है बच्चे. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Evidence. Hey, That's a keeper. Evidence. Got the evidence. I'm just saying. I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Huh. Doesn't being out, Dad. Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Check. I'm over here, Dad. दिख रहा है. Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Don! सही है बच्चों को मारना सिखाओ बहनचोद तुम. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Oh shit. Manka rip. Khasam. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Oh bhai sahi. Chutiya. Kinda deserved, not agreed. Kinda deserved. Oh bhai, Sam spent his life actually. shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Damn, right? मोमेंट भी फोटो वो फोटो का फ्रेम करवा लेना उसके बेटे ने करवा लिया होगा पक्का. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Nada pada.
Oh, divorce. Do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Oh, मैं भाई बच्चा बन गया हूँ. Little boy. Pew, pew. You could. बच्चे के हाथ में क्यों दे रहा है वो तो? That night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish you. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Third life. बच्चा मरवा दिया बेंचो. I
can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids. ओ भाई पतंग भाई कितना साल हो गए पतंग उड़ाए हुए. Said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I remember. Husband and wife. You may kiss the bride. ये कैसे पतंग है भाई, नीचे उतर ही नहीं रही है जितना भी लड़ा दो कहीं भी. करना क्या है? When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Oh, okay. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did. काइट में मोटर लगे क्या? सही में काइट नीचे गिरी नहीं रही है जितना लड़ा दो. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. वाह. The thunder Okay. sounded much too close and full of angry power. तो एक स्टॉर्म All my आया. father said to this was, "Make the music louder." स्टॉर्म ने पूरा सब तोड़ ताड़ दिया. काइट ने नहीं तोड़ा है, स्टॉर्म ने तोड़ा. ठीक है, दिखा अलग तरीके से रहे हैं बस वो चीज को. ब्लैक होल काइट आखिरी. भाई अरे भाई 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 अरे भाई तूफान ऑफ द ईयर. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. He died in the storm. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. गस कैसा मुर्गे जैसा मुंह है, देख रहे हो? देखो जरा, देखो 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 साले को कैसा मुर्गे जैसा बीच में निकला हुआ लाल लाल. Also a bit routine, fuck that, don't care. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Fly to India, all right. It's She time. spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. गेम में लोगों की डेथ कैसी हुई वो बता रहे हैं. हाँ, ये फैमिली ट्री है. अब ये है एडिथ. एडिथ आई है अपने उस घर में जहां पर उसकी पूरी फैमिली रही थी पहले. ठीक है, ये जानने की क्या हुआ था उनके साथ, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता है. तो वो अपनी फैमिली ट्री पूरा देखने आई है कि क्या हुआ उनके साथ. हाउ व्हाट हैपेंड टू देम. ब्रो, ताजमहल और इंडियन लौंडा
Dawn and Sanjay. Oh, two. I mean, long distance. Oh, Dawn and Sanjay. Hi. Got it. Why, Sanjay? Why? Another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. डॉन फिंच की स्टोरी कहाँ से पढ़ा हुआ है? वेट, डॉन की स्टोरी तो मैंने पढ़ ही नहीं पाया ना, ऊपर थी नहीं क्या? स्टोरी मिस नहीं होगा कोई भी। ओके ओके, फिर करना क्या था? ऊपर गया, ऊपर के अलावा मेरे ख्याल से आगे कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं था। I missed something. उस जमाने का माउस। ये गेम सजेस्ट किसने की? रस बॉय। Oh, ये रहा। My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Lewis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy Don to have her Lewis back Milton, Edith। and to see Oh, kids in the house again. तो ये क्या एक ही साथ है क्या? अच्छा, 3 भाई बहन है मेरे ख्याल से ये। तो ये क्या डॉन और संजय के बच्चे हैं? एडिथ, बोल। The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. अच्छा, हॉरर है? हॉरर नहीं है, दिखने में लग रही है स्टोरी टेलिंग है। But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. भाई भाई भाई, एक तो मैं टाइम सोया नहीं था, इतना लेट सोया था। पूरा पेंटिंग करता था भाई, पेंटर था, पेंटर। Milton Finch in The Magic Paintbrush.
हाँ अबे सकला का बूम बूम है क्या? इसको क्या हुआ? इसका समझ नहीं आया मेरे को. Oh. Okay, he fucking disappeared. All right, all right. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. क्या मिल गया था मिल्टन को जो उसकी माँ ने उसको गायब कर दिया? तो गड़बड़ है दया. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. रसो भाई के एंटीना से मैसेज रिसीव होता है, ऐसे गेम्स का हर जगह पहुंच जाते हैं. अच्छी बात है भाई. सूदी गेम खेलते बस. ये तो डिप्रेसिंग गेम है. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at अबे them. भाई. He died a lot. PS है बट नाम वंडरलैंड टर्बो लिख दिया. ठीक है, ठीक है. कॉपीराइट ना है. सही है, सही है. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. अरे मेरा सर घूम जाएगा. ये क्या एक तरफ मछली को इधर डालना, उधर एक तरफ एक उसमें उधर दिखा रहा है, उसमें गेम को भी कंट्रोल करना है. I asked him to describe it. मल्टीटास्किंग. हाँ. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. Bats. And toads.
And And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. भाई अरे भाई ट्रिप मार देगा ये तो. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. What the fuck? He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. अगर तुम लोग को नोटिस नहीं किया तो धीरे धीरे ये जो ना इसकी इमेजिनेशन बड़ी होती जा रही है. Shopping was as reliable as ever. और धीरे धीरे वो मछली वाले एरिया को घेरती जा रही है. That all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. लीवस नेता बन गया मतलब है. His mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. जहाँ ठोक दी भाई. St. Louis. St. Louis. We started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own अगर ये सिप का डी है कैंसिल करो सिप ठोके दे. अबे भाई. Sinister serpents. Sinister serpent.
He followed the sound of her silver harp. थक गया मछली काट His के chase led भाई. him to a golden palace east of the sun and west of the moon. अरे कितना मछली कटवाओगे भाई, हो गया, थक गया मछली. अरे अभी भी मछली कटवा रहे हैं भाई ये. अब तो दिख भी नहीं रहा, अब तो पूरा पीओवी हो गया उसका. He knew the world was all in his imagination. और राजकुमारी, why are you running? Why are you running, Rajkumari? But Come he was here. so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. भाई डिल्यूजनल था भाई, इतने नशे कर रहा था कि भाई इतना डिल्यूजनल हो गया कि उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है. वो कहानियां सोच रहा है बैठ के, मच्छी काटते काटते. सोच रहे हो, इतना नशा ना करें कृपया करके. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. भाई को लग रहा है बहुत सा है. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. हेलो ब्रो, कुछ पकड़ भी नहीं रहे हो तुम, क्या से हाथ फेर रहा भाई. देख रहा हाथ फेरे दे रहा, कुछ पकड़ भी नहीं रहा है. Lewis, fucking idiot. क्या करना है? I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. बंदा दिखा रहा है कि वो काम कर रहा है ताकि बॉस पैसा ना काट ले. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Molly. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head.
rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. मिल गया भाई को क्राउन इंडीड. San Juan Ale. Marijuana. ये करो बॉन्ग वॉन्ग बना के रखा है भाई. काका सीढ़ी साला. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. फ्लोर 12 चेंबर 1 में आयका फ्रीज और अलाइतम की टीम ले गया था. सिर्फ चेंबर 1 नहीं हो रहा, बाकी 2-3 हो गए. हेल्प नो हेल्प बिकॉज मैं स्पैर बस हेल्प नहीं कर रहा हूँ. देख रहा दूसरा गेम खेल रहा हूँ. आदित्य जब कर रहा था कल अकाउंट रिव्यू तब कल कर रहा जितना बट करना नहीं पाता. मोस्टली पेड ही थे सारे कल. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. बता फिर क्या करूं? जो टीम है उसी से करो. सेकंड हाफ में लाता ले जाओ, फर्स्ट हाफ में आयका ले जाओ. और काजुआ है तो फिर आयका को मारो गोली. सेकंड हाफ में लाइतम हाइपरबुलम ले जाओ और फर्स्ट हाफ में बेनेट सांगलिंग सिंचू और काजुआ ले जाओ. हो जाएगा. अरे मैंने वीडियो डाली थी शायद. अरे उसमें Maybe I should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. ओके. एडी का बचा, डॉन का बचा है. हम एडिथ पे पहुंच गए हैं. इज दिस द एंड? आई डोंट थिंक सो. पेड रिव्यू ही करते हो. वाओ क्या बात बोली है. उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना. जब सब मेंबरशिप ले लेंगे तो मैं क्या करूं. अब पहले बात तो अब इस बार का बेस ताईजी के पीटी में सबने कर लिया. मैंने स्पारलेस हेल्प किसी की नहीं किया मोस्टली. बस एक स्टार किसी का बचा था वो भी खुद कर लेता बंदा. बट एक स्टार था एक फ्लोर में तो मैंने कर ही दिया. मुझे पता नहीं आज नहीं तो कल लोग बोलेंगे पेड रिव्यू करते हो तुम सब. You know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. किस टाइप गेम है वैसे? स्टोरी टेलिंग. But Edie always had plenty of candles. When my mom said the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish... और गेम क्या नहीं? But there's only time for one.
This is about न्यू मैप अच्छा जाके कर लो एक्सप्लोर शायद 10-15 दिन बचे होंगे the tide when 3-4 घंटे में कंप्लीट कर लोगे एक्सप्लोरेशन It was the first and last time I ever saw the old house aground. वो ओल्ड हाउस वहीं पर वो जो लेके गया था ना ये चूतिया ओडिन जब लेके जा रहा था ना जहाज से जब वेव से टकरा के पूरा घर टूट गया था इसी हरा से बीच में पड़ा हुआ वो पूरा मलबा घर का God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. लग रहा आई थिंक आधे घंटे के बचा होगा और मेरे ख्याल से I got turned around. नहीं जा रहा मैं For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. इतनी बड़ी गेम है ये जो इतनी जल्दी खत्म हो गई 2.5 घंटे गेम थी इट्स लाइक अ मूवी मैं सही से फ्रेश करूंगा ना ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही डायलॉग हैवी ओपनहाइमर देख रहा हूँ लग रहा है बहुत डायलॉग हैवी पूरी नरेटिव वाली एकदम स्टोरी की तरह है ऐसा एकदम Edith, what are you doing in here? Oh, it's mine. Fuck. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. रिपीट तो होने वाला है Kicked and screamed, but Mom dragged biography kind of I never saw Great Grandma Edie again. Oh no, Edie. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, ओनली खेलो ना रहने दो मेरे को टाइम पास नहीं करना ओनली अपना रोल गेम है वो टाइम पास है पूरी तरह से we both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while. And then she didn't. अच्छा Dawn was her mother. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things.
But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. Okay. I'll tell you all these stories myself. Okay. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Did she suicide in the end? और मतलब नेचुरल डेथ थी कि इसने सुसाइड कर ली थी लास्ट में, घर पे जब गई थी ये देखने? It died during childbirth. Oh my god. Ah. गेम काफी अच्छा था, बट एक चीज कहूंगा कि ये हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी के लिए गेम नहीं है। बहुत ही स्टोरी, मतलब डायलॉग हैवी स्टोरी टेलिंग गेम है ये, ठीक है। हर कोई ये गेम नहीं खेल पाएगा मेरे ख्याल से, हर किसी के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से जिस तरह से हर किसी की स्टोरी दिखा रहे हैं, ठीक, आप हमको क्यों इंटरेस्ट आएगा, पर जिस तरह से दिखाया है ना स्टोरी, वो बहुत अच्छे से दिखाया है। इमोजी इतने बड़े बड़े हो गए भाई, ये यूट्यूब वालों ने पता है, ये जिस तरह से स्टोरी दिखाया ना, वो बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से डायरेक्टिव पॉइंट से बहुत अच्छे से सबका अच्छे से किया मेरे ख्याल से। किस चीज के लिए नॉमिनेट और विन क्या चीज इसने विन किया था अवार्ड? बेस्ट नरेटिव का अवार्ड जीता है गेम्स फॉर इम्पैक्ट। ये तो पक्का गेंशिन इम्पैक्ट ने जीता। नॉमिनेटेड बेस्ट इंडिपेंडेंट गेम नॉमिनेटेड, ओके। गेम ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेटेड था, ओके ओके कूल, ओके। ऐसा गेम मैं कभी नहीं खेलूंगा। मेरे काफी डिप्रेसिंग गेम थी, काफी डिप्रेसिंग गेम थी। The replay story is option now available. Select ready to play from beginning. तो एडी मर गई, ये तो बढ़ाओ तो हरकतों से ही मर गया साला, घर लेके जा रहा था। मुझे मॉली की स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी। मॉली की स्टोरी, बारबरा की, इन दोनों की स्टोरी बहुत क्रिएटिव थी, ठीक है। कैल्विन भी अच्छा था, सैम की भी अच्छी लगी मुझे। ग्रेगरी की बहुत छोटी थी, शॉर्ट सिंपल थी, ठीक है। डॉन ना लीविस की थोड़ी क्रिएटिव थी, ठीक है, बट काफी लेंदी थी, ठीक है, काफी लेंदी थी। मिल्टन की स्टोरी मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा थी नहीं, इट वाज लाइक ओके। वॉल्टर की स्टोरी काफी डिप्रेसिंग थी और नेचुरल थी, ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा मॉली की स्टोरी, सबसे पहली वाली जो बिल्ली वाली स्टोरी थी मॉली, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो। बारबरा की स्टोरी बहुत कूल थी भाई, जिस तरह से कॉमिक वे में उसको दिखाया ना, बहुत अच्छा क्रिएटिव व्यू से किया बनाया था वो चीज। I loved it. Nice game. रिप्ले स्टोरी में क्या होता होगा, फिर से बस वही सेम गेम खेलनी होती होगी कि कुछ चेंज करके देते हैं।
अच्छा ओ अच्छा, यू कैन रिप्ले किसी की एक स्टोरी किसी की रिप्ले कर सकते हो। अब किया ओके ओके, नाइस गेम, नॉट बैड। आई थिंक एक शॉर्ट सिंपल छोटी गेम थी, वैसे स्ट्रीम नहीं करने लगा आज। मैं स्ट्रीम करने का मन नहीं था, फिर मैं उसका अल्लाह रसवाइन बोल रहे तो वही खेल लेते हैं, छोटी सी गेम है, एक स्ट्रीम में ही हो जाएगी, खेल लेते हैं। नाउ व्हाट? चलो मैं जाता हूँ। ओके, नाइस गेम। अच्छा हुआ कर लिया स्ट्रीम, संडे को नहीं तो बोर होता। मैं फिर कल करेंगे कैंसिल और हॉन्का स्टार। कल मेरे को कल है ना वीकली रीसेट है ना, और वो भी करना है मेरे को। वेट, शायद मैंने वीकली बॉसेस नहीं किया कैंसिल में, आई थिंक। एयरटेल मेट्स गेम ट्राई करने बाद ही अच्छी है। नहीं, वो मॉली वाली स्टोरी काफी अच्छे से बनाई है यार। मेरे को अरे कोई अपना गेंसन अकाउंट खोल के बैठना जरा। मास्टर है क्या? भाई का अकाउंट भी होगा? अरे भाड़ जा, उसका अकाउंट पे क्या करता है, उसको कौन सा पहले दिन कैरेक्टर बिल्ड करना है। अपने को बिल्ड करना है ना अपना। मोस्ट अपना गेंसन अकाउंट अगर खोल के रखना तो अभी मैं आता, मेरे को वीकली बॉस करने का है। तो अकाउंट शायद मैं बोल रहा 12 मिनट एक गेम ही ट्राई करना बहुत अच्छा है। वेट, एक 12 मिनट की एक गेम है, 12 मिनट गेम खेलूंगा। चलो मैं आता मास्टर, बाय बाय, मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ। गुड नाइट।